Online students able to hear me? Yes, sir. Yes, sir. बाकी सब लोगों का वो फिर म्यूट कर देना, अदरवाइज मेरा वॉइस नहीं रिफ्लेक्ट होगा। या इफ यू हैव ईयरफोन्स, हाँ बाकी आप क्लास में तो चल जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एलएमए स्टार्ट किया? Yes, sir. कितना हुआ? Yes, sir. कितने टॉपिक्स कंप्लीट किए? या ऑनलाइन स्टूडेंट्स कितने चैप्टर्स कंप्लीट किए एलएमएस में? सर 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। ओके गुड। चलो बाकी सब मेरे भी 2 गए। 2 हो गए। स्कोरिंग कैशबिलिटी आधा हो गया होगा। ओके ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला हुआ होगा। यस। ओके ओके बाकी सब यहाँ से सबको वो 10 मिनट जस्ट अ मिनट।
Yeah, online students, I have shared the PPT of both these topics, money market and fixed income, in the WhatsApp. Can you see it? Yes. Can you just open those PPT now? Because I'm not able to share the screen due to some technical issues. Okay, Just okay. open that particular PPT. So I open fixed income securities. No, Okay. no, no, money market first. Okay, okay. First, open the money market. Yes, open. Okay, and come to slide number 19. Bidding process. No, no, treasury bills, T-bills. Slide Yes, treasury bills. या ऑनलाइन स्टूडेंट्स बाकी सब है ऑनलाइन यहाँ पे अभी ऑफलाइन में कौन कौन है वो ज्वाइन हो गई है ओके या सब एक बार नाम बोल दो क्योंकि आई एम कंफ्यूज हो गई हूँ अनीता या मिताली अभिराम राधा रोहित ओके जस्ट अ मिनट अर्चना आर यू देयर अर्चना Yes, yes, sir. ओके पीपीटी ओपन किया Yes, sir. ओके पायल Yes, sir. ओके पूजा Yes, sir. ओके रचना Yes, sir. ओके साजिदा साजिदा आर यू देयर Yes, sir. ओके शिवांजलि Yes, sir. नेहा Yes, sir. ओके ओके आई होप एवरीवन इज हैविंग नाउ दैट पीपीटी ठीक है ओके Yes, sir. तो टी-बिल्स हमने देखे थे बाकी है यहाँ से शायद बाकी था राइट कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस ओके Yes. नॉन कॉम्पिटिटिव बिड्स ऑप्शन फॉर्म्स फिर टी-बिल सेकेंडरी मार्केट में हमने देख लिए थे शायद कमर्शियल पेपर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स वो देख लिया था ना कमर्शियल हाँ, पेपर एंड वाला पार्ट देखा था. हाँ एंड रेपो वाज लेफ्ट repurchase agreement okay now let's first complete this treasury bills so just like our certificate of deposits come to slide number 19 okay everyone पीपीटी ओपन नहीं हो रहा है आपका वो कोई एप्लीकेशन नहीं होगा एमएस ऑफिस का सजेस्ट एनीवन आपका जो भी है जिनका पीपीटी ओपन नहीं हो रहा है प्लीज डाउनलोड एमएस ऑफिस एप्लीकेशंस ओके हो रहा है ना आपको हो गया आपका हो रहा है Yeah. So
So basically T-bills is another form of, we can say, part of money market. Treasury bills, another security instrument that will allow you to have a short-term trading. Short-term trading मतलब a lesser time frame, less than 1 year time. ठीक है. T-bills are generally of 91 days, 182 days, 264 days, and 364. Okay. So in US, they are sold in denominations of $1,000 having maturity of less than 1 year, such as 1 month, 2 months, 6 months, or it can even be less than 1 year, maximum 12 months. It means that rather than paying fixed interest payments like conventional bonds, the appreciation of the bond will provide the return to the holder. Matlab, for example, if it's trading at around 10 rupees, so 15 rupees will be the appreciation that you will be getting. Here, there will be no coupons or no interest that will be provided to you. कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा, कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं मिलेगा. ओके, या तो फिर समटाइम्स इट विल बी इशूड एट इंटरेस्ट पेमेंट्स, बट इट विल बी फिक्स्ड, से फॉर एग्जांपल 3% or 4% max, not more than that. So write one assignment over here. What are the present T-bill rates? What are the present T-bill rates for (91 days, 182 days, 284 days, 284 or 264? Just check it, which one it is available. Online students, written question? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. बेसिकली वो आपको या तो दैट GSEC की वेबसाइट पे मिल जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या तो फिर सम अनदर वेबसाइट, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द रेट्स. ओके, so if you want to buy a T-bill from the government, the price of the T-bill is, say for example, 9,800. The duration is 13 weeks. So after the maturity period of 13 weeks, you will receive $10,000. So your profit will be how much? $200. 10,000 minus 9,800. But here there will be no interest or coupon payments. The securities will be issued via a regularly scheduled auction process. Upon the treasury's announcement of the size of the auction, tenders or sealed bids will be solicited. Okay. I think someone volume is किसी का यहाँ पे है. Where the voice is getting reflected. Okay. Volume mute कर दो क्योंकि classroom में तो. Okay, no issue. So basically government will be issuing this T-bill securities. They will be giving an advertisement basically where you will be able to identify for what particular time frame at what particular price these T-bills are issued. Okay, so there is a formal advertisement that might be coming up. Okay, but basically these T-bills now are issued through competitive bidding process. Competitive bidding matlab, say for example, if I am bidding that I want to have lowest interest rate or lowest interest payments through these T-bills, then I will be the most eligible bidder in the process. जिसका सबसे कम रहेगा कूपन पेमेंट या इंटरेस्ट पेमेंट, he will get the T-bills. Very simple, right? मतलब गवर्नमेंट भी यही चाहेगी कि किसी को लोअर इंटरेस्ट पेमेंट्स या लोअर कूपन्स कैन बी प्रोवाइडेड. So competitive bidder will specify the amount of the security that the bidder wants to buy and the price at which he wants to buy. Second, it is defined in terms of yield. So yield is that particular difference. $200 आपका जो आया था वो आपका yield था. ठीक है. Now the price of the security in the auction is set based on the price that is offered in the competitive bids, taking the average of all the accepted competitive prices. For example, किसी ने 100 रुपए पे बिड किया, किसी ने 110 पे किया, किसी ने 90 पे किया, तो एवरेज कितना हुआ? 90 plus 100 plus 110 divided by 3, so that will be 100. Okay, तो 100 के प्राइस के ऊपर this T-bill will be issued. Okay, it's not necessary कि वो सबसे highest price या lowest price के ऊपर जाके बिड करेगा, but eligible होना चाहिए competitive bidding process के लिए. Competitive bidders are the world's largest financial institutions and 80% of all the treasury securities are sold to them. The treasury will accept the competitive bids with the highest price and the lowest interest rates and will reject the other bids. Okay, मतलब जो competitive bids, अगर आपका वो particular
प्राइस क्राइटेरिया में सेट नहीं हो रहा है तो आपका बिड रिजेक्ट हो जाएगा. यू विल देन नॉट बी एलिजिबल टू गेट द T-bills. Okay. So how now this actually process is working? So see this particular figure over here. For example, the government wants to issue T-bills worth $4 million and each bid is for minimum 1 T-bill. मिनिमम आपको एक T-bill खरीदना है, मैक्सिमम है आपका $1 million का. फ्लोर प्राइस है उसका 9,85,000. Now if you can see on the right hand side, तो किसी ने 9,90,000 पे बिड किया है, किसी ने 989, 950 पे बिड किया हुआ है, किसी ने 989, 900, 989, 800 या 870. ओके, सो ऑल दिस आर एलिजिबल बिड्स, क्योंकि फ्लोर प्राइस मतलब मिनिमम प्राइस. तो मिनिमम प्राइस इज हाउ मच? 9,85,000. तो ये सब एलिजिबल बिड्स में आ गए. वन थिंग, मैक्सिमम 1 मिलियन. 1 मिलियन मतलब अगर 1 मिलियन से ज्यादा किसी ने बिड किया, देन ऑल्सो ही इज इनएलिजिबल फॉर द ऑक्शन प्रोसेस. ओके, नाउ वी नीड टू डिटरमाइन कि इसमें हर एक को कितना यील्ड मिलेगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. ओके, सो बेसिकली 10,000 if you divide by 9,90,000 it will come to 1.0101. ठीक है, मैंने 9,90,000 इन्वेस्ट किया, मुझे कितना रिटर्न मिलेगा? क्योंकि द मैच्योरिटी प्राइस इज 1 मिलियन, तो उसमें मुझे 10,000 का रिटर्न मिला, लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट था 9,90,000. तो उस हिसाब से मेरा कैलकुलेशन हुआ 1.0101. अगर किसी ने 9,89,950 पे किया, रिटर्न हुआ 10,050, तो उसका यील्ड कितना हुआ? 1.0152. द डिफरेंस इज वेरी मच लेस, बट स्टिल जस्ट टू मेक श्योर कि वो ऊपर का थोड़ा बहुत भी रिटर्न ज्यादा मिलता है, तो समवन विल बी बिडिंग एट 989, 870 और उसका रिटर्न हो जाएगा 1.02. इट इज वेरी मिनिमल, ऑफ कोर्स 1% जितना ही हुआ, बट स्टिल पीपल आर डूइंग इट. ओके, I think we have seen the fixed interest rates of US savings, right? 0.5, 0.25 कुछ तो हुआ था, तो उसके कंपेयर में उनको बॉन्ड्स के ये फिक्स इनकम मतलब नॉट फिक्स इनकम, दिस T-bills के rates will be better than that, so they will prefer to go for T-bills rather than having fixed deposits. Yeah, correct? Any doubt in this? Clear? Okay. Now no. रिटर्न आपका जितना हुआ 10,000 फर्स्ट केस में डिवाइड बाय 9,90,000 आपका इन्वेस्टमेंट था. ठीक है, सो इट विल कमिंग टू 0.01. ये एक्चुअली परसेंटेज में है, तो इट इज कमिंग टू 1.01. ओके, शायद होगा. या इट इज इन परसेंटेज. ओके, सो बेसिकली रिटर्न डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला हुआ ROI. कोई डाउट? हाँ बोल. अच्छा, पेज नंबर 21. ROI का नॉर्मल फॉर्मूला, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. अगर इफ यू डिवाइड 10,000 डिवाइड बाय 9,90,000 तो वो आएगा 0.01. तो यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, now which will be the non-competitive bids? Probably it will be including retail investors, because उनको आइडिया नहीं आएगा कि कहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम में हमारा एलिजिबल बिड होगा. ओके, कंपेयर टू लार्ज इन्वेस्टर्स. So they also, the purchase will be low volumes. They cannot buy just like large retailers high volumes, and also do not have sophisticated technical expertise to submit that bid. Third, they will be having particular limits. Beyond certain capital, they won't be able to invest. अगर मेरे पास 5 लाख है तो 5 लाख का ही बिड में मार पाऊंगा. ठीक है, आई कैन नॉट बिड लाइक बिगर प्लेयर्स जिनके पास 5 करोड़ का कैपिटल है या 50 करोड़ का कैपिटल है. ठीक है. फोर्थ, डायरेक्ट परचेजेस ऑफ सिक्योरिटीज बाय इंडिविजुअल्स इज वेरी लिमिटेड इन मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज, एंड इन सच केसेस दे आर जनरली यूज द सर्विस ऑफ द डीलर्स. डीलर्स मतलब ब्रोकर्स. यहाँ पे पहले तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि T-bills कब इश्यू होते हैं, कब आता है, कब जाता है. ठीक है, सो फॉर दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई आइदर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज और सच ब्रोकर्स हु आर डीलिंग इनटू मनी मार्केट्स. वही आपको सब इंफॉर्मेशन देंगे. जैसे अब हमको इक्विटी मार्केट में डायरेक्टली जैसे मतलब ये अपना एक्सचेंजेस पे पता चलता है, इनका एक्सचेंज तो होता नहीं है. ठीक है, डायरेक्टली उनकी वेबसाइट या प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे लिस्ट होते हैं वहाँ पे ही आपको पता चलेगा. राइट, सो यू नीड टू हैव हेल्प ऑफ आइदर डीलर्स, ब्रोकर्स और दिस इंटरमीडियरीज टू एंश्योर यू गेट द राइट इंस्ट्रूमेंट्स एट राइट प्राइसेस. ओके, देन auction form. Now there are 2 types of price auction form: uniform and discriminatory. Slide number 23.
Okay. First one, uniform auction is when all the bidders are paying the same price, and discriminatory matlab it will be when the bidder will be paying different price. So in that example that we have seen, whether was that an example of uniform or a discriminatory? अभी जो टेबल देखा था वो यूनिफॉर्म ऑक्शन प्राइस था या डिस्क्रिमिनेटरी था? डिस्क्रिमिनेटरी हर एक का अलग अलग था ना, किसी ने 9,90,000 हर एक का सेम नहीं था, किसी का 989, 988 ऐसा हुआ था. Okay, so write this definition of what is uniform auction price and what is discriminatory auction price. Sir? Yes. Sir, how uniform auction price works means actually how it is practical, how all the bidders come to know that this price, we should decide this price. See, we will, first of all, we are not going to decide the price, or zyadatar maximum, most of the time it will be discriminatory. But if you come to that slide number 21, तो वहां पे हर एक का prices are not uniform. If you can check, किसी ने 990 पे बिड किया हुआ है, किसी ने 989 पे बिड किया हुआ है, किसी ने 989 870 पे बिड किया हुआ है, राइट? वो दिख रहा है टेबल? Yes sir. हाँ, तो see on that basis particularly it will be difficult to judge कि कौन से प्राइस के ऊपर exactly ये अपना टी बिल एक्सरसाइज होगा. Government will then decide कि okay, this is the average price and at this particular price we are going to issue the T bills. But otherwise it's very difficult to identify. Okay. Okay sir. Written everyone? Okay. Now what? हाँ yes. Slide देख लो. Offline students, just you can skip that meeting because अभी projector पे नहीं हो रहा है, so you can skip the meeting and directly view the slides. Okay? तो जो voice वो reflect हो रहा है. Done? Okay. Now, what are the cap price and the floor price? Cap price is also known as the ceiling price, maximum price at which you will be able to bid for the T bills. And floor price is the minimum price or the base price for which you are going to. Again, मतलब just imagine the flips. Ceiling मतलब top level होगा, floor मतलब lower level होगा. Okay, just remember that like that. Okay. So this is slide number 24, where cap represents the maximum price in the price band at which the security will be issued, and floor will be the minimum price in the price band during which the security will be issued. अब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो maximum floor price या maximum cap price या minimum floor price के ऊपर ही आपका T bill issue होगा. It can be the average price also. It can be the uniform price also, depending what type of auction bidding have come from different players. Okay. The lowest competitive bid is accepted first. As a result, the highest bid prices are accepted first. ठीक है, next slide, 25th number पे.
मतलब क्या हुआ, लोवेस्ट कॉम्पिटिटिव बिड मतलब उनका प्राइसेस जिसका हाई होगा 9,90,000 हाईएस्ट बिड था, उसके आगे किसी का नहीं था। तो इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स फॉर द इन्वेस्टर्स इट विल बी लेस, बट फॉर गवर्नमेंट उनके लिए तो रिटर्न कम देना पड़ेगा ना, तो दे विल बी बेयरिंग लेसर कॉस्ट कंपेयर टू हायर रिटर्न देने के लिए। ओके, so in that particular perspective the lowest competitive bid always is accepted first and the highest bid prices are accepted in that situation. The lowest rejected bid yield is known as stop yield. Lowest rejected bid yield मतलब 9,84,900 अगर किसी ने डाला है, 9,85,000 तो मिनिमम बिड था उस केस में, तो 9,84,900 किसी का है, दिस इज नोन एज द लोवेस्ट पॉइंट या तो द स्टॉप यील्ड जहां से रिजेक्शन स्टार्ट होगा। Okay, from that point onwards none of the bids will be accepted. Okay, each competitive bidder will be paying the price of the securities which is determined by the yield, and the average yield is the average of all the accepted competitive bids weighted by the amounts allocated. Now see, it might happen that for example there will be 10 players at 9,90,000, there will be 5 players at 9,89,000, and there will be 15 players at 9,88,000. So weightage will be different. 10 प्लेयर 990 पे खड़े हैं, 5 प्लेयर 989 पे है, 15 प्लेयर 988 पे। इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट विल हैपन इज, आप एवरेज तो निकाल रहे हो बट अलोंग विथ इट जो यील्ड सबको मिलेगा वो हर एक केस में अलग अलग होगा। ओके, बिकॉज मैक्सिमम कितना होना चाहिए था 10 लाख, उतना ही यील्ड है उनका वहां से, तो 10 लोगों को 10,000 मिलेगा, 5 लोगों को 11,000 और 15 लोगों को 12,000, राइट। 10 लाख इज द यील्ड, राइट, फाइनल प्राइस दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट। इन दैट पर्टिकुलर केस जो एवरेज आएगा सबका वो आपका होगा एवरेज यील्ड। ओके, so you need to calculate like that, 10,000 into 10 plus 5,000 into 5 into 11,000 plus 12 into 15 into 12,000. So that will be the average yield divided by number of bidders. समझ में आ रहा है? नहीं, एक्सेल शेयर नहीं हो रहा है, वो प्रॉब्लम है आज। सी 9,90,000 पे 10 लोग खड़े, तो मैक्सिमम उनको यील्ड कितना मिलना चाहिए मैच्योरिटी पे? 10,000। कैसे आया 10,000? 10 लाख माइनस 9,90,000 तो 10,000 हुआ। कितने लोग खड़े हैं वहां पे? 10 लोग, वी आर एज्यूमिंग 10 लोग खड़े। ओके, सो यू विल राइट 10 into 10,000 प्लस, अब 9,89,000 पे कितने लोग खड़े हैं? 5, फॉर एग्जाम्पल 5, उनको यील्ड कितना मिलेगा? 11,000। 5 into 11,000 प्लस 9,88,000 पे 15 लोग खड़े हैं, तो उनको यील्ड कितना मिलेगा? 12,000। 10 लाख माइनस 9,88,000 12,000 हुआ। 12,000 into 15, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 plus 5 plus 15। हाँ, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जितने भी है। हाँ ठीक है, तो जो भी यील्ड आएगा, लेट्स कैलकुलेट कि कितना आ रहा है। इन दैट केस लेट मी सी, 10,000 into 10 plus 11,000 into 5 plus 12,000 into 15, right, divided by how much? 15 plus 5, 20 plus 30. So everyone will be receiving average yield of 11,166. ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया ये वाला? Yes, yes. ये अभी भी समझ में नहीं आया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज रिस्पॉन्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। सर मेरा तो आ गया, मेरा आ गया। Yes, sir. Understood. 11,166 आ गया ना? Yes, See, yes. if anyone Yes, wants to sir. still identify, I am just typing that message in the chat box, you can get an idea. Hope that's clear to everyone. Yes, sir, clear. ठीक है, 990 पे 10 लोग खड़े हैं, 989 पे 5 लोग और 988 पे 15 लोग, डिवाइड बाय 30, 10 plus 5 plus 15, ठीक है। ओके,
So tables then we have seen, right? Secondary market. So treasuries tables secondary market matlab those tables which are listed on the secondary market. Secondary market already they have been issued once and now they are going to be buy and sell between different entities. The role of the brokers and the dealers will be important over here. They have narrower bid and ask spread. Price of the T-bill is the price which will an investor will pay for a particular maturity. So मतलब यहाँ पे वही चीज होगा, लेकिन फॉर एग्जांपल आपने प्राइमरी मार्केट से खरीद लिया है, ठीक है. नाउ यू डोंट वांट टू वेट टिल मैच्योरिटी, आपको सिर्फ 1000 का प्रॉफिट लेके निकल जाना है. तो यू विल बी देन सेलिंग दैट टी बिल इनटू सेकेंडरी मार्केट. से फॉर एग्जांपल आई एम बाइंग फ्रॉम यू, ओके, बट यू विल से कि मुझे 1000 पे कर दो, ऊपर का जो 9000 है आप रख दो. 9,90,000 का कैपिटल तो आपका एटलीस्ट वो मतलब वो यू कैन रिलीज दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट. भले आपको 1000 का ही प्रॉफिट है, बट यू माइट बी इन सर्च ऑफ कैपिटल और यू माइट बी हैविंग सम इमरजेंसी रिक्वायरमेंट बिकॉज ऑफ व्हिच यू आर सेलिंग द टी-बिल. तो सेकेंडरी मार्केट में जाके आप वहां पे बेच रहे हो. हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज तो नहीं बोल सकते, बट दैट टी-बिल इज गेटिंग सोल्ड इन दिस सेकेंडरी मार्केट लाइक दिस. एक्सचेंज तो नहीं होगा क्योंकि वी आर नॉट एक्सचेंज. एक्सचेंज मतलब मैं कुछ दे रहा हूँ तो आप मुझे कुछ दे रहे हो. तो यू डोंट हैव इट, बट यू आर जस्ट सेलिंग विद वॉट एवर यू आर हैविंग इट, ठीक है. एंड द प्राइस ऑफ कोर्स विल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो. मतलब अगर 10,000 हमारा फ्यूचर कैश फ्लो था, ठीक है, फ्यूचर कैश फ्लोस इज मोर ऑफ लाइक द रिटर्न दैट यू आर रिसीविंग. सो इन दैट केस 10,000 में से आपको 1000 दे दिया मैंने और 9,000 आई विल बी कीपिंग इट टिल द लाइफ ऑफ द मैच्योरिटी. यस, आफ्टर मैच्योरिटी मिलेगा मुझे. Since the T-bill does not generate interest payments, the value of the present value will be at par value. That is fine. Commercial paper we have seen, right? And certificate of deposit. Commercial paper हो गया था. Certificate of deposits वो भी हो गया था ना? Oh, yes. Yes, CP and CD and TDs all this one. Now, Yes, okay, yes. now come to slide number 31. Repurchase agreement. Okay. Repurchase agreement, repo. And now don't confuse this with the repo rate of RBI. Yeah? उसके साथ वो mix मत कर देना. If I'm asking what is repo, तो वो बोलना है. If I'm asking what is repo agreement, तो फिर ये बोलना है. ठीक है. So even sometimes if it is asked in the interview, clarify करके sometimes पूछ लेना. Sir, you are asking the repo rates or sir, you are asking the repo agreement. जो भी आपका question हो. ठीक है. Okay. Now repurchase agreement is an agreement to buy any securities from the seller with the agreement that they will be repurchasing that particular security at some specified date and price in the future. So moreover, this is like a buyback situation. ठीक है, पहले सेलर ने आपको दे दिया और वापस से फ्यूचर में वो आपके पास से वापस ले लेगा. ठीक है, डेफिनेशन पहले क्लियर हुआ रेपो का. The seller is selling the security to the buyer with an objective to buy it back in the future at specified date and at specified price. So first write the definition of repo.
Written, everyone? Okay. Now the repo transaction will represent more of is backed by securities. On default, lender has a claim on the securities. मतलब see whatever the amount you are paying, securities आपको वो दे रहा है, ठीक है? यहाँ पे एक चीज important है, the securities which the seller is giving it to you, the buyer will be providing a loan to him, more of like that. ऐसा ही हुआ, ठीक है? With an objective कि या तो कूपन देगा, इंटरेस्ट देगा, कुछ तो रिटर्न में दे देगा. That's fine. But say for example, the seller is getting defaulted in the sense he is not able to buy back that particular securities in the future, you have the right to sell those securities. Is it clear? Okay. For the party which is selling the security and agreeing to repurchase it, it is known as the repo. For the party on the other end of the transaction, it is a reverse repo. मतलब repurchase वापस कर रहा है इसलिए. So come to slide 32. First leg में क्या होगा? The seller of the securities, he will be selling the securities to the buyer. And second leg में क्या होगा? Buyer of the securities, he will be providing the securities back to the seller, and seller in return either will provide interest payments or can provide coupon or any yield or any other mode of payment. But in the case if he is getting defaulted, these securities will be he will be able to sell it. Okay. Now these securities can be anything. Okay. It can be equity or it can even be debt instruments. मतलब अपने certificate of deposits भी होगा, time deposits भी हो सकता है, T-bills भी हो सकता है, और any equity stock also. It can be anything. Okay. Now what is repo price? Now the amount of the repo loan is determined as repo का loan कैसे determine करते हैं? Come to slide number 33. Repo principal is equal to securities market value into 1 minus haircut margin. Okay. So securities market value is determined as the current value of the securities, which is equal to par value of the securities into 1 minus D into n by 360. This is the formula that you need to write. अब ऐसा क्यों करते हैं, पहले रीजन समझ लो, फिर राइट द फॉर्मूला एंड देन वी विल सी वन एग्जांपल. ओके. सी किसी को गोल्ड लोन के बारे में पता है? गोल्ड लोन बैंक्स दैट आर प्रोवाइडिंग नाउअडेज. अब गोल्ड लोन जो है उसमें डू यू थिंक दैट गोल्ड जो हम मतलब सिक्योरिटी के तौर पे उनको देते हैं, whether it is valued at the current market price? Anyone from banking sector, online students? No. या बैंक में जॉब कर रहे हैं या समथिंग लाइक दैट? No one from the banking domain? Huh? No, it is not at the current value. अगर से फॉर एग्जांपल कितना चल रहा है अभी गोल्ड? 50 के आसपास चल, तो 50 मान के चलते राउंड फिगर 50 के. ओके. नाउ से फॉर एग्जांपल आपने 10 ग्राम्स का कुछ डिपॉजिट किया, तो आपको लगना चाहिए कि क्या होना चाहिए उसका? 50,000. 10 ग्राम्स इज इक्वल टू 50,000 है ना, राइट? तो इन दैट केस व्हाट दे विल बी डूइंग इज दे विल बी कैलकुलेटिंग 70% ऑफ दैट पर्टिकुलर गोल्ड वैल्यू जो मार्केट प्राइस पे चल रहा है. व्हाई? बिकॉज से फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा फ्लक्चुएशन आ गया गोल्ड के प्राइसेस में कि जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइस कम हो गए, तो उनके लिए तो नुकसान 70% के ऊपर देते हैं. दैट मीन्स 70% ऑफ 50,000 इज हाउ मच? 35,000. तो 35,000 इज द लोन दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू, नॉट ऑन 50. ओके. सो यहाँ पे भी सिमिलर हो रहा है रेपो में. किसी जो सिक्योरिटी सेलर हमको दे रहा है उसमें भी फ्लक्चुएशंस तो आ सकते हैं, राइट? तो फॉर आवर प्रोटेक्शन व्हाट वी विल बी डूइंग इज we will be discounting that price of that security. Okay. तो यहाँ पे जो D है, D represents the rate of discount. Now it will be in the range of 10 to 20%. Okay. N is of course the time period or the term period of the securities. 1 साल है, 2 साल है, जो भी है, या 6 months, whatever it is. If it is in terms of days, divide by 360. अगर साल है तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? Another thing, तब जाके आपको पहले मिलेगा securities market value. Okay. Now second layer of that discounted price is added, which is known as haircut margin. Haircut margin मतलब जो आपका से फॉर एग्जांपल 35,000 आया था सिक्योरिटी मार्केट वैल्यू, लेकिन मुझे लग रहा है यार एक और चीज में ट्राई करता हूँ. लेट मी नाउ कीप दिस वैल्यू फर्दर डाउन बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि गोल्ड का प्राइस ऊपर नीचे बहुत हो गया, तो हाउ विल आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ? तो हेयरकट मार्जिन मैंने रख दिया 20%. तो 1 - 20% मतलब 0.8 हुआ.
ओके, तो 0.8 ऑफ 35,000, मतलब अभी आपको 80% ऑफ 35,000 निकालना है, जो कुछ आएगा आपका समथिंग अराउंड, कितना आएगा काउंट करो, 80 ऑफ 35,000 कितना है? 2800। हाँ नो, 2000 तो नहीं होगा, 28,000 होगा, 28,000, ठीक है। तो एक्चुअल प्राइस कितना था आपका? 50,000, और आपको मैं सिर्फ उसका काउंट करके दे रहा हूँ 28,000 लोन में। तो से फॉर एग्जाम्पल आप अगर कल डिफॉल्ट हो जाते हैं 28,000 का रीपेमेंट में, तो आई विल बी एटलीस्ट सिक्योर। और मेरे साथ ये होता है कि गोल्ड के प्राइस सीरियसली डाउन हो गए और कुछ 35,000 पे आ गए, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा होगा नहीं बट जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा एक्चुअली फिर भी आई एम हेज फॉर 7,000, मेरे पास कुछ तो बचेगा मेरा, वरना 15,000 का लॉस हो जाता, 50,000 का सिक्योरिटी दे देता पूरे का पूरा अमाउंट का, और गोल्ड का भाव कल अगर 35,000 हो जाता तो मेरे लिए तो नुकसान था। लेकिन अभी 28,000 ही आपको दे रहा हूँ, और 35,000 के ऊपर प्राइस चल रहा है गोल्ड का, तो मेरे लिए 7,000 इज माई इंटरेस्ट पेमेंट। अब सेलर सिक्योरिटी तो वैसे ही डिफॉल्ट हो गया, तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है, ठीक है, इज इट क्लियर? सो इट इज मोर ऑफ लाइक अ 2 layer security for yourself who are actually providing that particular principal value. So just straight to formulas: repo principal and security market value, which is SMV. Monday, by Monday. Around 11. Done. So now calculate one example. Okay, everyone. I am providing all the values of the different variables mentioned here. आपको calculate करना है. Okay, discount rate is 10%. Time frame n is equal to 540. 540. Okay, days. Okay. Par value of the security is 25,000. Par value of the security is 25,000. And haircut margin is 5%. Find the repo value. 5%. Everyone find the repo value. डिस्काउंट रेट कितना बोला? 10.
10%. I have mentioned values in the chat box if anyone is not able to find it. और ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज राइट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स. Yes, yes. जैसा कैलकुलेट हो जाता है प्लीज राइट ओवर देयर. कितना हुआ? 20,187. आपको भी वही. बाकी कितना? 19,000 आया है. हाँ, बाकी 24 तो नहीं होगा डेफिनेटली, क्योंकि पहले वो 10% तो ऐसे निकल जा रहा है. हाँ, 5% लास्ट में भी है हेयरकट मार्जिन, तो उससे तो कम ही आना चाहिए. लेट मी. हाँ, लास्ट हुआ इनका, आपका हुआ कितना? 1 लाख के ऊपर? 25,000 का तो सिक्योरिटी है, ऊपर तो जा नहीं. मतलब आप मुझे 25 दे रहे हो, मैं सामने से आपको 1 लाख दे रहा हूँ. हाँ हाँ, एक सेकंड ऑनलाइन से देखते हैं क्या क्या आंसर आ रहे हैं. 21,250, किसी को 21,187, 2 लोगों को 20,187 आ रहा है और 1 लोगों को 21,250 आ रहा है. तो रेपो फिर कैलकुलेट करना है ना? हाँ हाँ हाँ, तो वही हमको वही फाइनल करना है, 21,187. तो जिनको आपका कितना आ रहा है आपका? आप कितना फिर भी पहले दो. हाँ, अच्छा. परसेंटेज को नहीं लिया होगा इसलिए. 5% मतलब 0.05.
लेकिन इंटू n बाई 360 तो है। 540 डिवाइड बाई 360 कितना है? 3/2। 3/2 मतलब 1.5। 1.5 मल्टीप्लाई बाई डिस्काउंट रेट कितना है? 10% है। तो 1.5 इंटू 0.1 करना है, तो 0.15 हुआ ना, वो 0.15 हुआ। ठीक है, अब 1 माइनस 0.15 कितना हुआ? 0.85। 0.85 इंटू 25,000 वो कितना आया? 21। अच्छा ओके, ये वाला ठीक है। नहीं 185 तो नहीं आया तो पूजा 180 से 2 रुपए का चेंज कहाँ से लेके आए? 2.5 रुपए का, समथिंग इज मिसिंग। बाकी लोगों को आ गया अभी? यहाँ पे ऑफलाइन में सबको आ गया ना पीछे? क्या अभिराम आपको आ गया? हाँ हाँ कर लो एक बार, जिनका पेंडिंग है कर लो। देन वी आर मूविंग। 21,250 को फिर आपको वो हेयरकट मार्जिन भी करना है, 1 माइनस इंटू 0.05। हाँ ठीक है, तब जाके आपको आएगा 20,187.5। 20,187.5 इज द करेक्ट आंसर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किनको अभी ये नहीं आ रहा है, कैन यू प्लीज? हेलो Yes, sir. Ma is correct answer. एक सेकंड, अर्चना आपको आ गया? यस, वो पहले वाला मैंने हेयर कट वाला नहीं किया था तो बाद में किया अभी था। हेयरकट, हाँ हेयरकट के बाद आ गया ना? हाँ आ गया। ओके पूजा? हो गया सर मेरा अभी। क्या कैलकुलेट कर रहे हो? हेलो या पूजा, आई एम नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपरली। पायल? हेलो सर। हाँ हाँ सर आ गया मेरा भी। आ गया ना? ओके पायल। हाँ सर। सर एक्चुअली मैंने भी वो हेयर कट वाला नहीं किया था, अभी किया है। हाँ अब मतलब अभी आंसर आ गया ना वो Yes. 2187। यस सर। ओके ओके, सो इज इट नाउ क्लियर कि कैसे आ रहा है? ठीक है, ओके ओके। परसेंटेज को कन्वर्ट करना मत भूलना, वरना पूरा वहीं पे रॉन्ग होगा। ठीक है, 5% को 5 लिख के निकल गए तो फिर गलती हो जाएगा। और एक क्रॉस चेक के लिए इतना याद रखना कि जो सिक्योरिटी की वैल्यू दे रखी है उससे कम ही आना चाहिए, उससे डेफिनेटली ज्यादा तो आने का मतलब नहीं है। डन, वो सिक्योरिटी मार्केट वैल्यू है। फिर रेपो, रेपो में वही सिक्योरिटी मार्केट वैल्यू इंटू 1 माइनस हेयरकट मार्जिन, तो 1 माइनस 0.05, तो आपका हो गया वो 95% ऑफ दैट 22,000 या जो भी है, 21 क्या था। हाँ ओके, एक और कैलकुलेट करते हैं, आई होप इस बार सबका सही आ जाए। डन, ओके वन मोर वी आर गोइंग टू डू, राइट डाउन द वैल्यूज। n is equal to 720, n is equal to 720 days, discount is 20%, d is equal to 20%, haircut margin is equal to 10%, 10%, और securities market value मतलब par value is equal to 67,000। हाँ, got all the values online students? एन 720 n राइट? 720, yeah, ओके। please calculate everyone।
क्या आंसर आ रहा है सबको? 36,180. Okay. Yes. 36,180 is the correct answer. Okay, so now is it clear why we are doing it and calculations कैसे होते हैं? ठीक है? Whenever this calculation is required to be done, every values will be provided, but make sure कि आप percentage का convert करना मत भूलना. Okay, rest is fine. So the purpose of haircut margin, the function of a broker or the dealer securities portfolio that cannot be traded but instead must be held as capital to act as a cushion against the loss. So basically ये अपना ऐसा वर्क करेगा जैसे CRR और SLR वर्क करते हैं बैंक्स के लिए. सब कुछ पूरा का पूरा लोन अमाउंट नहीं देंगे. ठीक है? The deduction from the current market value of the securities collateral required to do the repo transaction is made, which is known as haircut margin. So write that second definition. What is haircut margin? And write the fourth statement also. The haircut offers protection to the lender in case the borrower gets defaulted. Second and fourth statement. Slide number 34. What is haircut margin? Done? Written everyone? Okay. Okay. Yeah. Any questions in now? Then we are done with the topic of money markets. We will start now fixed income. Okay. Online students, any doubt in this now? Then we will otherwise start with fixed income. No, sir, no doubt. Okay. Arshna, Payal, Pooja, Rachna, any doubt in this? No, sir. No, no, sir. Shivanjali, Sneha. No, sir. No, sir. Okay. So let's start then.
open the PPT of the fixed income which I have shared, right? So now coming to another securities which are known as fixed income securities. So fixed income securities are a type of debt instrument which provides returns in the form of regular or fixed interest payments along with the repayment of the principal. These investments will provide periodic income in form of either interest or coupons. These securities can be issued by any legal entity such as central and state governments, public bodies, banks, institutions, statutory corporations and corporate bodies. So now this is another security which will be providing you either interest payment or coupons. So coupons will be more of like you are getting discounted price of that security and maturity पे वो ज़्यादा होके आपको वापस मिल जाएगा. But it can see now the difference basically in the money market fixed income कहाँ पे आता है? This is more of like being issued by government entities more, not only just by central and state government, but also by even district, you can say panchayats or even taluka panchayats also are issuing. Why they will be needing money? उनको क्यों पैसा चाहिए? So basically, they will be into town planning or something related to development of hospitals or schools or something like into that particular districts or villages or something like that. Okay, so sometimes they are even borrowing in this particular case, wherein they will be seeking 5 साल के लिए इतना हमको पैसा चाहिए. We will be providing you fixed coupons or fixed interest payments, and you will be investing into it. But why you will invest? Because it is the safest way of investing. वो default नहीं करेंगे. You can't say that government has defaulted unless and until it is Sri Lanka, right? Okay. So write the definition of fixed income securities. Written? Okay. Now, what are the basic advantages of investing in fixed income? Of course, higher yields. Sometimes the government will be saying that we will even provide 6 to 8% of returns on the fixed income securities that we are launching. Second one, of course, lowest risk because loss is limited to the amount of money for which the bonds are held. But basically over here, since it is backed by government agencies or government itself, the chance of getting defaulted is 0. Set maturity. So basically it is having a predefined maturity period. So say for example 5 years, 10 years, or it can even be greater than 15 years in very long term cases. कहाँ पे होगा ऐसा? कौन से प्रोजेक्ट्स में होगा कि जिनको 15 साल का भी चाहिए? Such as मेट्रो, 21 प्रोजेक्ट. Yes. अब ज्यादातर आपको वो एक्सप्रेस हाईवेज, ब्रिजेस, समथिंग वगैरह वो सब जो बन रहा है वहां पे 10 साल 15 साल लग जाता है. ठीक है? Okay. Now there are also different types of bonds to choose from. So there is a large variety of such instruments based on issuer, payout, market, and interest type. Based on all this categorization, different types of bonds are being issued in the market. It is a reliable income. If you are having a very retired type of life and you are having surplus amount of very spare money,
You can just invest 10 lakh of rupees and just get the interest income, just like FDs, but higher interest rates, very safe, that too in a safe manner. And liquidity, so they can also be traded on the OTC market as well as exchanges, depending whether they are available or not. Okay, so some of the private sector companies are also issuing bonds nowadays. They are getting listed, not listed on the exchanges, but OTC market hi hoga, but of course they are available on the exchanges. Okay, so these are the key advantages of investing into fixed income. Just write the type of bonds based on issuer, payout, market, and interest type. That particular line or sentence you can write it. Large variety wala. Bonds are issued based on issuer, payout, market, and interest type. Mila? Slide number वही 3 मिला कि नहीं मिला? और एडवांटेज में लार्ज वैरायटी वाला जो है ना स्टेटमेंट वो लिखना है. Written everyone? Okay. Now, basically जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होंगे यहाँ बॉन्ड्स पे, दे विल बी आइदर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट. व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट? ओके. Okay. Interest on interest is also calculated. Okay. Anyone remember the formula of simple interest? PRN upon 100 और compound interest का क्या था? N. लेकिन that will give you the actually amount. So you need to deduct that principal amount. After that you will be getting that interest calculated. Okay. So now let's calculate simple interest in different cases and compound interest in different cases. Okay. क्या किया था क्या हमने? सिंपल इंटरेस्ट कब किया? ओके ओके. और कंपाउंड इंटरेस्ट? तो दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग, बॉन्ड्स वगैरह हो गए क्या? जीरो कूपन बॉन्ड है और ये सब? नो. कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जंक बॉन्ड बाकी है ना? ओके. डू वन थिंग, जस्ट सेल्फ कैलकुलेट करो एक कंपाउंड इंटरेस्ट का. सिंपल का तो फिर भी हो जाएगा डायरेक्टली. एलसी में है ना वो इन्वर्टेड वी होता है ना एक शेप का ऑपरेटर. हाँ, साइंटिफिक कैलकुलेटर में इन्वर्टेड वी का होगा, वहां पे जाके यू कैन डू इट. ओके. Compound interest part also done. हाँ, क्या बोल रहे हो? Compound interest part also done, sir. कंपाउंड इंटरेस्ट? Compound interest part means also we are done in the previous lecture. इट वाज डन इन द प्रीवियस लेक्चर. Yeah. ओके. हाँ वो ठीक है, लेकिन एक बार फिर से कैलकुलेट कर दो. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. Okay. हाँ, सो राइट प्रिंसिपल इज इक्वल टू 50,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, 50,000, और n is equal to 5 years. Rate of interest is 8%. N is 5 years. 8. Please calculate compound interest for this period. Online students, आंसर आ जाए तो चैट बॉक्स में लिख देना.
Principal amount 50,000. N is equal to 5 years and Y is 8%. Okay. Right. 1 point. क्या एक मिनट लेट मी जस्ट कैलकुलेट अमाउंट था कितना 50,000 कैसे करेंगे आर इज हाउ मच 8% by 100 73,466 is the amount and interest rate is received is 23,466. Okay. आया कि अभी भी नहीं आया पीछे कहाँ पे अटके थे वो तो किसी को नहीं मिलता है remember A is equal to T plus raised to n.
wherein this is the amount, final amount, right? You need to subtract 50,000 from the principal amount. So that is why 23,000. सबको आ गया ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes. Yes. Okay. चलो, let's move on. Now, what is the basic difference between equity and fixed income? So first of all, by purchasing an equity, an investor will become owner in the company. Lekin in the case of fixed income, he will just be a lender. He cannot be the owner of that company. Okay. Second option, risk factor will be high in the case of equity, but there will be no risk associated in the case of fixed income. The returns on equity will be variable, whereas the returns on fixed income securities, it will be fixed. The equities will have no maturity. Why? Yeah, it's up to me. I want to sell it till the end of my lifetime. I can hold their securities. But in the case of fixed income, it will be having fixed time maturity. In the event of liquidation, equity holders will have the last preference and fixed income will be having the first preference. Why? Because you are the lender in that case. Okay, liability पहले pay करना पड़ता है, उसके बाद जाके कुछ बचता है, तो then I will be able to pay the equity shareholders. And finally, investors who have purchased equity are eligible for voting, but for fixed income, they are not eligible for voting. अगर इंटरव्यू में कोई ऐसा क्वेश्चन आए, तो आप कैसे डिफरेंस करोगे? मतलब कैसे याद रखोगे सब 6 पॉइंट्स? मतलब which are all the points? Telling from first one. Okay, ownership. Second one, risk factor. Okay, R. Then return. Okay, maturity. Okay, investor. Voting rights, right? An investor is high. Okay, returns on equity is a no maturity. Okay, these are known as mnemonics. Now, what we need to do is these are the initials of all those 6 differences between both. Okay, mnemonics मतलब हर एक का फर्स्ट अल्फाबेट आपको याद रखना है. Say for example, ownership, returns, risk, maturity, preference, and voting. Now, yeah. So now initials हो गए, ठीक है? Now in this case, now you need to rearrange these words in such a way that story बन जाएगा. Okay, just for easy of remembering this, what we can do is. So unable to hear you. Yeah, I'm coming to just a minute. Like this. Don't begin, right? Okay. So the vice president of the company is always demanding more sales. Okay. So basically, you see, online students, what I'm trying to teach over here is how to remember if there is so much of theory. You can use mnemonics. Mnemonics मतलब first alphabet of all the sentences that you are taking. So in this case of differences of equity versus fixed income, first alphabet मतलब ये जो 6 points आपको दिख रहे हैं स्लाइड नंबर 5 पे, पहला था आपका ओनरशिप, सेकंड वन वाज रिस्क फैक्टर, थर्ड वन वाज रिटर्न, फोर्थ वन वाज मैच्योरिटी, फिफ्थ वन वाज प्रेफरेंस एंड लास्ट वन इज
No, third. And last one was voting. Okay, so what we have written basically is, I'm writing in the chat box, you will get more idea over there. Okay, so here I have written ORRM and then DP, sorry, PV. So I have just rearranged these words as VPMORR, and you can frame this story as Vice President always demands more sales. Now it is easy to remember. So if you just remember VP more, so V for voting, P for preference, M for maturity, O for ownership, R for risk, and R for return. Is it easy now to recall? Online students, अभी idea आ गया? Yes, sir. Yes. ये थोड़ा easy system है ना, recall करने के लिए, याद भी रह जाएगा. कुछ भी stories you can frame now, depending on the mnemonics that you have formed. Okay. ये स्टोरी पहले आता तो कई जगह पे काम में आता नहीं. किसी ने किया है क्या ये ट्राई? ऐसे किया है ना? तो वही चीज हमको वापस करना है और क्या. Okay. Now, water bonds, the US bond market is exceeding around $50 trillion in market, making it the largest securities marketplace in the world. Bonds are also debt instrument issued for the period of more than 1 year with the purpose of raising capital for the purpose of borrowing. मतलब $50 trillion के bonds are already issued in the market. Just imagine the amount of money that has been collected. अपनी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन के आसपास घूम रही है और $50 trillion के तो बॉन्ड्स ही घूम रहे हैं पूरे दुनिया में. ठीक है. और बाकी सब इंस्ट्रूमेंट्स डिफरेंट है. इक्विटी मार्केट अलग, बॉन्ड डिफरेंट अलग, वो ट्रेजरी बिल अलग, सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स अलग. ओके. Now who basically deals with the bonds? We have already seen the federal government, state government, cities, corporations, and all types of institutions. Corporate and government bonds vary significantly in terms of the risk. Now the same bond has having different names or definitions in different countries. Say for example, US में उनको बोलते हैं treasury bond. Okay, UK में बोलते हैं gilts. जर्मनी में बंड्स और इंडिया में क्या बोलते हैं? GSEC बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स. ठीक है, GSEC लिखते हैं वहां पे. ठीक है, तो जस्ट राइट दैट नेम्स ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन डिफरेंट कंट्रीज. क्लास में नहीं है ना किसी का? मोबाइल किसी का बज रहा है? किसी का तो कॉल बज रहा है यार. ओके, रिटर्न एवरीवन. इंडिया का भी लिख देना. ठीक है, GSEC. ओके, GSEC गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. ठीक है. नाउ कैटेगरीज ऑफ द बॉन्ड्स ऑन द टाइम फ्रेम पीरियड या मैच्योरिटी पीरियड कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज: शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 5 years, मिड टर्म मतलब 5 to 15 years, एंड लॉन्ग टर्म मतलब ग्रेटर देन 15 years. ठीक है, दिस इज द कैटेगराइजेशन ऑफ द बॉन्ड डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड. ओके. Now, corporate bonds are secured against the assets of the company, whereas some of them are even unsecured. So secured bonds are those bonds which are secured on the assets of the issuing company, which are also known as debentures.
and unsecured bonds are those that are referred to as unsecured. Basically क्या difference होगा secured और unsecured bonds में? Can anyone just visualize secured and unsecured bonds? क्या difference हो सकता है? हाँ, yes, anyone from online? यस सर, अगर सिक्योर्ड लिया है तो अगर लॉस हो जाता है या फिर कोई डिफॉल्ट हो जाता है तो कंपनी उस सिक्योरिटी को बेच के रिकवर कर सकती है, और अगर अनसिक्योर्ड हो तो फिर उसमें कोई रिकवरी नहीं हो सकती अगर लॉस हो जाए। ओके ओके, कंपनी तो नहीं, लेकिन हाँ इन्वेस्टर या जो भी है वो सिक्योरिटी को बेच के करेंगे. So basically the risk will be high in the case of unsecured bonds. Simultaneously the return that is being provided in the unsecured bonds will be high. ठीक है, 24% 36% आपको ऑफर करेंगे, तो you should not get trapped into that. तो टाइप हो जाएगा फिर. ठीक है, 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम हो जाएगी ना इन दैट केस, राइट? सो और सिक्योर्ड में क्या होगा? ऑफ कोर्स देयर विल बी बैक्ड बाय द सिक्योरिटी. सो इन द केस इफ द that investor the company is getting defaulted, you will be able to sell the assets. Okay, now characteristics of the bonds and the bond terms. Generally क्या होता है? First of all will be principal amount, how much notional or the principal amount that you need to invest. Second is the number of years to maturity. Third will be contract interest rate. Fourth will be market interest rate, and fifth will be interest payment schedule. तो principal amount आपका जो minimum amount that you need to pay. Okay, second is the number of years to maturity, right? So it can be 1 year, 5 year or 20 years depending upon the type of maturity that you need to pay. Third one will be contract interest. See now contract interest rate और market interest rate में दो difference है. Contract interest rate मतलब जो actually आप जब bond खरीदते हो तब उस टाइम में interest rate आपको कितना दिया जाता है? Say for example 10%. Now market rate में interest rate मतलब on an average such types of bonds which are being issued could be given at an average rate of 8%. It can be possible, right? बाकी जो बॉन्ड इश्यू करती है कंपनीज या कुछ दूसरी गवर्नमेंट एजेंसीज वो 8% पे करती है, लेकिन आपको 10% पे दिया गया है, तो 2% आपको ज्यादा मिलेगा. वन थिंग. एंड इंटरेस्ट रेट का पेमेंट का शेड्यूल मतलब वेदर इट इज मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या ईयरली. व्हाट इज सेमी एनुअली, क्वार्टरली, 3 months, 4 months, 3 months, और fortnightly 15 days. fortnightly मतलब 15 days होता नहीं है, लेकिन just for the sake of मतलब ऐसा टर्म आए तो कहीं पे भी. ठीक है, so interest payments are being calculated in this manner. Okay, now what could be the reasons of investing into bonds? First, higher interest rates. We are on slide number 11. Okay, एक सेकेंड, सॉरी. ठीक है, चलिए यहाँ पे 2 slides have been modified इसलिए. First one will be higher interest rates in the case of unsecured bonds. ज्यादा इंटरेस्ट 24% का मिल गया. नाउ सी इट्स नॉट ऑलवेज मैंडेटरी को डिफॉल्ट हो ही जाएगा, लेकिन अगर मिल जाता है तो अपने लिए अच्छा है, 24% का रिटर्न. ठीक है. सेकेंड, सम ऑफ द बॉन्ड्स आर टैक्स एक्सेप्शन. आप टैक्स इनकम टैक्स जब पे करोगे इन दैट पर्टिकुलर केस you will be able to get that particular tax rebate. जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया हुआ है या तो जितना रिटर्न मिल रहा है वो भी टैक्स रिबेट मिलेगा. ओके, हाँ, डिफॉल्ट हो गया तो प्रिंसिपल ही नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट तो का तो दूर का स्टोरी हो गया. आपका आप पैसा ही वापस नहीं आ रहा है उस केस में, तो इंटरेस्ट का तो कहाँ कैलकुलेट करेंगे फिर, राइट? Okay, then these instruments are liquid in nature. Why? Because if I want to sell the bond in the market, I can sell in the secondary market. ठीक है, या तो एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है तो डायरेक्टली वहां पे भी मैं सेल कर सकता हूँ अगर पैसे की जरूरत पड़ी या मुझे रिटर्न सेटिस्फैक्टरी मिल गया, जो भी है. ओके, इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड इज ऑफ कोर्स सेफर देन इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटीज, स्टॉक, शेयर्स, जो भी है. स्टॉक्स का तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, राइट? A company can issue bonds again and again, and each bond can have different maturity period, interest rates, and terms conditions.
मतलब एक ही कंपनी पहले इश्यू किया बॉन्ड एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 ईयर, लेकिन 6 महीने बाद दे इशूड अनदर बॉन्ड with an interest rate of 6% but with a maturity period of 3 years. Possible? ठीक है. Examples are L&T Finance Holdings, Muthoot Finance, National Highway Authority of India, Indian Railway Finance Corporation. So if you can see, they are not only just stock listed companies. National Highway Authority of India तो खुद का एक individually agency है, ठीक है, तो वो भी issue कर सकती है. So write the example as well as write this line. A company can issue bond again and again, and every bond will have different maturity period, interest rate, and terms conditions. Okay. Just a minute. Written, everyone? चलो. Now categorization of the bonds जो हमने एक पहले लिखा था, इसका it can be based on issuer, collateral, maturity. Maturity तो आपने लिख लिया था, ठीक है, अलग अलग टाइम फ्रेम, लेकिन this will be different maturity. And last one will be other bond types. So first one, on the basis of issuers, if you are going for it, it can be government bonds, it can be corporate bonds, or it can be municipal bonds. So corporate मतलब private sector companies, right? Muthoot Finance is a private sector company, right? Second one is a corporate bond. Government bonds. So government bonds, G-Sec securities we have already seen. And third one will be municipal ones, which can be issued by district panchayats or something, municipalities and something like that. We have already seen the examples. Then comes into based on the collateral. Collateral मतलब securities के साथ अगर वो दिया गया है, तो you have the right to sell those particular securities in an event where the issuer is getting defaulted. ठीक है? So secured and unsecured bonds that we have seen based on maturity, zero coupon, perpetual, deferred, callable and putable bonds. We will be studying all of them into detail in the next slides. Last one are the convertible bond, foreign exchange bond, inflation index bonds and junk bonds. So many types of different. What कुछ ऊपर ही है ना? Okay. So now basically, if we go and check for the corporate bonds, first of all, पहले थोड़ा theory देखते हैं, then we will be checking on the websites also कि हर एक का कहाँ पे कौन सा bond issue किया गया है, ठीक है? So corporate bond is a bond issued by a private sector company. Second, it is basically required to raise the money for expanding business operations. Bond तभी issue करेंगे. What can be the different business operations? We have studied in IPO, expansion, debt, paying of debt, then working capital requirements,
इंफ्रास्ट्रक्चर और कौन सा? Market diversification. ये मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, IT अपग्रेडेशन, ठीक है, दिस कैन ऑल बी द रीजंस फॉर different types of purpose of issuing the bonds. Now the term here can be applied to long-term debt instruments, generally with a maturity date falling of at least a year after issue date. Okay, so ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट टर्म के लिए 5 साल, मिड टर्म होगा तो 5 to 15 एंड ग्रेटर देन होगा तो लॉन्गर टर्म 15. Corporate bonds are listed on major exchanges as well as equity convertible notes types, which is an instrument that a holder can convert into specified number of shares. मतलब अगर डेट रिकवर नहीं हो रहा है या अगर उसको फ्यूचर में इक्विटी चाहिए उसका, those are known as equity convertible notes. These are initially bonds, but later in the future they will get converted into equities. ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो. प्योर अगर इक्विटी राइट मतलब स्टॉक में कन्वर्ट हुआ, दे विल बी गेटिंग इट, लेकिन कुछ प्रेफरेंस टाइप का हुआ तो देन दे विल नॉट बी गेटिंग इट. दे विल देन ओनली रिसीव द डिविडेंड्स, दे विल ओनली रिसीव द कैपिटल एप्रिसिएशन. या कैन बी डिपेंडिंग ऑन द कैसी कंपनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना. लेकिन अगर मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनी है तो प्रॉब्लम नहीं है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है तो प्रॉब्लम नहीं है, एपोलो हॉस्पिटल है, ये सब ने इशू किया हुआ है तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी दे आर इनटू द मार्केट फॉर से फॉर एग्जांपल 10 to 20 इयर्स नाउ. ठीक है, तो इतना प्रॉब्लम वो नहीं होता है अभी उनके लिए. तो वो लक्ष्मी चिट फंड का एग्जांपल दिया ना मैंने, फिर तो पैसा आपका निकल जाएगा और क्या, अनसेक्योर्ड बॉन्ड हो जाएगा. इनटू डिपेंडिंग, अगर वो कन्वर्टिबल नोट है तो कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी, इट्स नॉट मैंडेटरी, बट दैट पर्टिकुलर बॉन्ड शुड हैव द फीचर ऑफ ECN. वो जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो बॉन्ड लेने के लिए तब उसमें अगर लिखा है कि ECN अवेलेबल है तो ही आप कन्वर्ट कर पाओगे, अदरवाइज इट्स नॉट कन्वर्टेबल. तो फिर तो आपका पैसा डूब गया. नहीं क्या क्या ऊपर होगा Sir, we are not able to hear you. नहीं अभी just one student is asking the query, so I'm just listening to him. I'm not speaking as of now. Okay. Okay. See, assets आपको तब बेचने हैं जब कंपनी बैंकरप्ट हो गई और आपको पहले उसमें भी लायबिलिटीज पे करनी है. ओके, लायबिलिटीज मतलब लोन वगैरह जो भी दिया, जिनका लेंडर्स है उनका पैसा, उसके बाद आएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, लास्ट विल बी द इक्विटी होल्डर्स. ओके, वन थिंग. सेकंड, डोंट कंफ्यूज बिटवीन बॉन्ड्स एंड इक्विटी कन्वर्टिबल नोट्स के साथ, उसको दोनों को मिक्स मत करो. दैट इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द बॉन्ड. अगर आपके बॉन्ड में ऐसा मेंशन्ड है कि इन द फ्यूचर यू कैन कन्वर्ट दिस बॉन्ड इनटू इक्विटी, तभी आप इक्विटी में कन्वर्ट कर पाओगे, अदरवाइज नॉट. ठीक है. एंड थर्ड थिंग, all the bonds will be having a fixed interest payments associated. लेकिन इक्विटी में तो आपका जो कैपिटल एप्रिसिएशन है, या तो अगर डिविडेंड मिलता है तो दो ही चीज से आपको रिटर्न मिलेगा. एंड इट्स ऑल्सो नॉट मैंडेटरी. अगर कंपनी का नेगेटिव वैल्यूएशन चला गया, कंपनी का प्राइस गिर गया और डिविडेंड भी इशू नहीं कर रहे हैं, तो देन इट्स लाइक आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, डूब नहीं जाएगा. लेकिन जब तक वो वापस, से फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ पेटीएम, ठीक है, जब तक वापस आपका जो ओरिजिनल प्राइस था 2000 के आसपास, वहां पे आपने अगर खरीदा हुआ है तो आपको वेट करना पड़ेगा. देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट. क्लियर ना? गवर्नमेंट का तो आपको फिक्स्ड पेमेंट से मिलेगा. देयर इज नो ECNs ओवर देयर. वो तो मैच्योरिटी के टाइम पे डायरेक्टली आपका पैसा वापस, एंड इन बिटवीन आपका पूरा कैश फ्लो आ जाएगा इंटरेस्ट का एवरी ईयर, या जो आपको मतलब जिस
मोड में आपको बोला गया है, इसलिए भी डिस्कस ना कि क्वार्टरली आएगा, सेमी एनुअली पेमेंट आएगा या ईयरली पेमेंट आएगा। अगर 1 लाख डाला है और उन लोगों ने बोला कि 10,000 का देंगे आपको रिटर्न एवरी ईयर फॉर 15 ईयर्स, तो हर साल आपको 10-10 हजार के 15-12 आपको मिलते रहेंगे। इज इट क्लियर? Sir, I have a doubt. हाँ बोलिए। Sir, in case if a company get liquidated, so at the time of Okay. repayment, preference will be given to preference shareholders or bond holders, the person who have Bond bond. holders will be first. Bond is a debt instrument. डेट मतलब पैसा लेंड किया हुआ है आपने, ठीक है, तो लायबिलिटी है वो कंपनी की। उसके बाद आपका प्रायोरिटी आएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और उसके बाद आएगा आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्लियर? डेटर्स को पैसा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इसी इक्विटी में आप लायबल नहीं हो ना। आप लॉजिक समझो, इक्विटी के आपने पैसा इन्वेस्ट किया कंपनी में, वो आपने मैंने आपको थोड़ी बोला था आप जानबूझ के मेरे कंपनी में पैसा डालो, लेकिन यहाँ तो मैंने सामने से पैसा उठाया है मार्केट से इन टर्म्स ऑफ डेट, बिकॉज आई नीडेड इट। इक्विटी में आपको अच्छा लगे तो इन्वेस्ट करो, अच्छा नहीं लगता देन डोंट इन्वेस्ट इट, इट डिपेंड्स। इक्विटी में हाँ yeah, preference shares is first and normal equity shareholders will be last. बैंक लोन से all types of loans, कोई भी लोन होगा उनको पहले देना है। Any type of yes, after that bonds. नहीं, but again that will depend कि किसका कितना है। अगर पैसा उतना बचा ही नहीं है तो प्रोपोर्शन में जाएगा। 50 लाख का आउटस्टैंडिंग अमाउंट खड़ा है लोन का और एसेट को बेच के भी 10 लाख ही आपके पास है, तो फिर वो 1:5 के रेशियो में हर एक को मिले। ओके, उसको बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, दिस नहीं डिफॉल्ट लोन को क्या, एनपीएस, पूरा एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया ना बैंक के लिए। तो बैंक का लोन तो वो एसेट है उनके लिए, हमारे लिए लायबिलिटी है, राइट? Then comes the government bonds. So government bond is issued by the national government, generally with a promise to pay same interest payments and repay the face value on the maturity date. They are also known as sovereign bonds. The default risk is very small and hence are also known as risk-free assets. Sovereign bonds usually refer to the bonds issued to raise the capital from foreign country. So basically, किसी ने सुना है gold sovereign bonds या sovereign gold bonds? It is having hardly 3% rate of interest. लॉक इन पीरियड इज 3 years, मतलब आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक हो जाएगा, बट बेसिकली यू विल स्टिल रिसीव 3%। व्हाई? बिकॉज एटलीस्ट आपके लिए वो सेफ वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। एंड वन मोर थिंग, जितनी भी आज की जनरेशन है, ओके, दे डेफिनेटली आर गोइंग टू इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड्स, दैट इज फाइन, बट उनका गोल बहुत शॉर्ट टर्म रहता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, 1 साल में कुछ पैसा इकट्ठा हो गया, स्मार्टफोन ले लेते हैं, iPhone 12, 15, 20 जो भी आ रहा है, ठीक है, Samsung 30, 40 जो भी मिल रहा है, बट what are the prices of those phones? 1 लाख अप्रॉक्स राउंड फिगर ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप सोचते हो कि चलो ठीक है, हर महीने में म्यूचुअल फंड में 10,000 डालता हूँ, 1 साल में 1,20,000 हो गया, जो भी रिटर्न मिला अच्छा है, मेरा शॉर्ट टर्म गोल अचीव हो गया। अच्छा, मोबाइल आया गया, उसके बाद क्या आएगा? 2 व्हीलर, उसके बाद क्या आएगा? 4 व्हीलर, उसके बाद, ठीक है। दिस इज द प्राइमरी वे ऑफ अप्रोचिंग ऑल दिस थिंग्स, राइट? बीच का खर्चा भूल जाओ, ठीक है, वो इंडिया डोमेस्टिक टूर्स, वर्ल्ड टूर्स वगैरह उसका साइड में रहेगा। बट अब ऑन अ पर्सनल नोट, आपको एक ऐसा वे ऑफ इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो आपको 10 साल 15 साल के बाद का पैसा दे। वाई? अगर वो लॉक इन है ना, तो ही वो आपका पर्पस सर्व करेगा। नाउ व्हाट कुड बी योर गोल्स आफ्टर 15 इयर्स? 15 साल के बाद आपका गोल क्या होना चाहिए, या कहाँ पे गोल आप सर्व कर सकते हो? Sir, your voice is fluctuating. Voice is fluctuating. बाकी सब लोगों को भी यही लग रहा है क्या, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. फ्लक्चुएट हो रहा है? Yes. How come? Now it is coming clear, or there are still issues coming? Now it's clear. Okay. Yeah, tell me, what will be the financial goals for you after 15 years? बट कहाँ पे खर्च करोगे वो मैं पूछ रहा हूँ। सेविंग्स तो पैसा होगा तो ही खर्च कर पाओगे ना, तो गोल क्या होगा उस टाइम पे?
रियल एस्टेट 1, ओके, एनीथिंग एल्स? खर्च करने की बात हो रही है, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हम लोग। फ्यूचर जनरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट 1, हाँ ठीक है। और उसके बाद हाँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी बताइए 15 साल के बाद कहाँ पे पैसा खर्च करोगे? फाइनेंशियल गोल्स, एनी एजम्पशन विल डू, कुछ तो बोल दो। Gold, हाँ gold maybe. Land. कैन एनीवन राइट इन द चैट बॉक्स? थोड़ा वॉइस आपका इधर उधर जा रहा Sir, है। land. लैंड, रियल एस्टेट, हाँ वो ठीक है। देन एनीवन एल्स? स्नेहा, शिवांजलि, साजिदा? Gold. So gold. कोविड? Gold, गोल्ड, gold. गोल्ड, अच्छा ओके गोल्ड। Sona. कोविड कहाँ से, वही मैं सोच रहा हूँ। Okay, gold is fine, but still that is an asset. That is not you are spending something into. You are just transferring your liquid cash into gold. तो खर्च नहीं हुआ आपका। So maybe motor. 15 साल के बाद मैनेज vehicles. करोगे? अच्छा, तो 15 साल के बाद का तो बोल रहा हूँ, आफ्टर 15 years। 15 साल के बाद शादी कर रहे हो तो ठीक है। See, most important it will be the medical expenses of your parents first of all, ठीक है। इमरजेंसी फंड्स चाहिए आपको उस टाइम पे, वन थिंग। सेकंड, आपके फ्यूचर जनरेशंस का एजुकेशन और उसके मैरिज वगैरह सब कुछ। रियल एस्टेट वगैरह तो 15 साल में कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे हाउस इन लोन लेके, ठीक है। तो आपको एक ऐसा फंड चाहिए जो आपको इकट्ठा भी करना है और पूरे 15 साल के बीच में आपको उसमें से स्पेंड नहीं करना है, वरना वही सैमसंग का स्टोरी चलता रहेगा 2 साल के बाद। इट्स वेरी ऑब्वियस, ठीक है। टू स्टॉप दैट यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट इनटू ऑल सच गवर्नमेंट बॉन्ड्स। Getting the point? Why government bonds are important now? Pension schemes is very different, वो भी होना चाहिए। नेशनल पेंशन स्कीम्स या पेंशन फंड्स जो भी होते हैं जो आपको 30 साल के बाद रिटर्न देंगे, तो वो भी होना चाहिए। बिकॉज हु नोस, अभी इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है तो 30 साल के बाद व्हाट यू आर एज्यूमिंग क्या होगा? पेट्रोल 1000 रुपीज पर लीटर, मिल्क तो बोल रहे हैं अच्छा अमूल का बैग 500 रुपए पर बैग आ रहा है। इज इट पॉसिबल? है, आराम से फीजिबल है, ठीक है। तो अभी से पैसा इकट्ठा नहीं करोगे तो 15 साल के बाद तो पता नहीं क्या सिचुएशन होगा। इवन 10 लाख और 20 लाख ऑफ सैलरीज ऐसा लगेगा कि 10-20 हजार की नौकरी कर रहे हैं, राइट। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज डेफिनेटली गोइंग टू राइज, राइट। सब्जी लेने गए, अच्छा पता चला 20,000 खर्च हो गए। विजुअलाइजेशन तो अच्छा रखो, विजुअलाइज करने में क्या कुछ गलती है, ठीक है। 15 साल के अगर एक साल में इफ यू आर हिटिंग द सेंचुरी इन द पेट्रोल, मुझे याद है कि 35 रुपीज का कुछ तो मैं 10 साल पहले मतलब या 15 साल पहले हुआ करता था, ठीक है। और आई थिंक इन अराउंड 2000 जब आप शायद किसी का पता नहीं आपका बॉर्न ईयर कौन सा है, लेकिन उस टाइम पर तो डेफिनेटली 2000 के आसपास 50 भी नहीं था, 50 से नीचे मैंने देखा हुआ है। 35 आई हैव सीन, ओके। हाँ तो आपके टाइम में वही 50 का होगा, तो मेरे टाइम में 35 का इज पॉसिबल, ठीक है। 5 साल पहले या 7 साल पहले की फिर बात हो जाएगी, तो डेफिनेटली उस टाइम पे होगा। तो सिमिलरली उस टाइम पे मतलब अमूल का बैग कितने का? 10 रुपीज आई हैव बॉट टिल 2008, 10 रुपीज आई हैव बॉट अमूल का मिल्क बैग इन 10 रुपीज। आज क्या चल रहा है? 35 अप्रोक्स। अच्छा 40, वो अलग अलग वेराइटीज, दैट इज फाइन। 35 विल बी अ रेंज, okay. So considering all these things, government bonds या any such fixed income securities are very much important. सब कुछ स्टॉक मार्केट में डाल के मतलब स्वाहा मत कर देना, because they can give returns and they cannot give returns. तो आपको कुछ एक ऐसा 20-30% आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए जो एक्सपोजर टू डेट इंस्ट्रूमेंट्स होना चाहिए, ओके। ये आपको समझे ना, आपके क्लाइंट्स को, मुझे नहीं, मतलब इन्वेस्टमेंट बैंक में जाके, ठीक है। So we have already seen UK में बोलते हैं गिल्ड्स, जर्मन बॉन्ड्स आर नोन एज बंड्स, यूएस बॉन्ड्स आर नोन एज टी-बिल्स या टी-नोट्स, एंड इंडियन बॉन्ड्स को जी-सेक्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ कम्स द जीरो कूपन बॉन्ड, इसके बाद वी विल टेक अ ब्रेक, ओके। नाउ जीरो कूपन बॉन्ड इज अ बॉन्ड व्हिच इज बॉट एट अ लोअर प्राइस विद द फेस वैल्यू विल बी रिपेड एट द फ्यूचर. It does not make any periodic interest payments and hence they are known as zero coupon bonds. When the bond reaches the maturity period, the investors will be receiving the par value or the face value. मतलब 500 पे इशू हुआ था
5 साल के बाद आपको फेस वैल्यू था उसका 1000, तो 1000 रुपीज विल बी रिटर्न टू यू, तो 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, हर साल का 100 रुपया. The difference between the purchase price and the redemption price is the coupon amount that you will be receiving. Examples can be US saving bond, long-term zero coupon bond, or any other bonds. And zero coupon and deep discount bonds are terms which are used interchangeably. मतलब दोनों का meaning same है. Deep discount या तो zero coupon are one and the same. Okay. So how the value is calculated? Write this formula. Zero coupon bond value is equal to maturity value divided by 1 plus I to the whole of number of years. I will be that interest rate basically. Actually काउंट नहीं होता है, लेकिन रिवर्स कैलकुलेशन के लिए अगर कुछ पूछा जाता है, से फॉर एग्जांपल नीचे जैसे मैच्योरिटी वैल्यू में 8% लिखा है, तो I is equal to 8%. ओके, तो जस्ट टू डिवाइस कि हमको पता चले कि हमको कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिला है ऑन जीरो कूपन बॉन्ड. एटलीस्ट आपको जब कंपेयर करना है जीरो कूपन बॉन्ड वर्सेस अनदर बॉन्ड्स, तो एटलीस्ट आपको कैलकुलेशन के लिए तब तो चाहिए. गेटिंग माय पॉइंट. आपको डायरेक्टली उस टाइम पे क्या दिया होगा, करंट वैल्यू एज वेल एज फेस वैल्यू. तो यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट कि इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ रिटर्न आई एम गेटिंग, सो दैट आई कैन जज कि अच्छा ये मुझे कम दे रहा है तो दूसरा बॉन्ड आई विल बाय. ठीक है, so let's calculate one. ठीक है, face value is 5000. Online students now able to hear properly, right? Yes. Okay, please calculate this one. आपको सबको फॉर्मूला दिख रहा है ना जीरो कूपन बॉन्ड का? हाँ. Okay, face value is how much? 5000. Maturity value is equal to 12% and number of years are 5. Find the bond value. ऑनलाइन स्टूडेंट जैसे आंसर आ जाए चैट बॉक्स में लिख देना. हाँ, सी एक्चुअली जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है, इश्यू हुआ 500 रुपए पे और मैच्योरिटी पे आपको मिला 1000. ठीक है, तो 500 रुपए आपको प्रॉफिट हुआ, जो भी मैच्योरिटी 5 साल 10 साल जो भी. लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर मुझे निकालना है तो उसके लिए आई नीड टू हैव दिस फॉर्मूला. ओके, तो उससे क्या पता चलेगा कि जो भी दूसरे बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है या ट्रेजरी बॉन्ड या जो प्राइवेट सेक्टर के बॉन्ड्स हैं, तो एटलीस्ट आई विल बी एबल टू कंपेयर कि यहाँ पे 8% मिल रहा है, दूसरी जगह पे 12 मिल रहा है, वहां पे जाके इन्वेस्ट कर दूंगा. ठीक है, कितना आंसर आया?
आपको बाकी लोगों को 2837। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को व्हाट इज द आंसर ऑनलाइन पीपल? 2837 बाय पायर। ओके, 2837 किसको आया था? तो लोगों को, आपको 1000 में आया, कुछ ज्यादा ही डिस्काउंट कर दिया। हाँ, नंबर ऑफ ईयर्स में गलती, इसको कुछ ऐसा बोलते थे ना मैथ्स में, सिली मिस्टेक्स। बस इतना सा रह गया, इतना सा छूट गया स्कूल में। आ गया सबको 2837? स्नेहा? Yes, sir. 2837.3. So Okay. calculate. ओके, रचना आपको आ गया? Yes, sir. साजिदा आपको? नहीं सर, बिकॉज ऑफ कैलकुलेटर मुझे वो कैलकुलेट करने के लिए नहीं हो रहा है। मैंने जब नॉर्मली कैलकुलेट किया तो वो 25,000.6 आया। क्या फॉर्मूला 5,000 बाय 1 5000 डिवाइड बाय 1 प्लस प्लस 12 20%। हाँ, तो 1.12 हुआ वो। एक सेकेंड। 5 years जो है ना सर, उसमें जो फॉर्मूला दिया है जो 50 में, वो कुछ ठीक वो है, कुछ तो नहीं होगा ना। 1.12 टू द रेज ऑफ, पहले 5 कर दो, ठीक है, और जो भी आंसर आ रहा है इसको 5000 से डिवाइड कर दो। तो साइंटिफिक कैलकुलेशन 1.12, हाँ साइंटिफिक में कर दो कैलकुलेट। 1.12 टू द रेज ऑफ 5 आपको 1.762 आ रहा होगा, ठीक है। इसमें इफ यू डिवाइड कैसे क्या? 5000 1.762, तो सर मैं कुछ ना आया, पता नहीं, पॉइंट ज्यादा आया। 5000 डिवाइडेड बाय आपको 1 प्लस है ना, 1 प्लस 12% है वो, ठीक है। हाँ बोल, क्या बोल रही थी आपने? तू अभी तक यू ऐसे कैसे बेटा? नेहा कैन यू म्यूट इट? ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सॉरी सॉरी। Okay. This is the calculation that you need to do. In the chat box I have written. So this will be coming 5000 divided by 1.762, which is equal to 2837. Sir, at the time of maturity, then we will be getting 7,837, No, right? no. Then This is the price of the bond. 2837 is the price of the bond. At the maturity period, you will get 5000. okay, We are doing the sir. reverse thing. Got it. 2800 के आसपास आपको बॉन्ड इश्यू हुआ था, मैच्योरिटी पे आपको 5000 रुपए मिलेगा। सो आपको इतना पता चला कि 5 साल में मुझे 12% रेट ऑफ रिटर्न के साथ इतना पैसा मिला। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. यू विल बी एबल टू कंपेयर कि अच्छा दूसरे बॉन्ड्स के कंपेयर में मुझे ये बॉन्ड सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? ओके, नाउ लेट्स हैव अ ब्रेक, ठीक है। सी यू एट 12. ओके students, we are taking a break and we will meet at 12 p.m.
Okay.
कंप्लीट करतो का नाही 22 ते 46 स्लाइड करणार की पाचवा डे म्हणजे 1 2 3 4 चला इतनी मेहनत मत करो, कुछ गुड न्यूज है आपके लिए आज के दिन में। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एवरीवन इज बैक। यस अभी कुछ लोग बाकी है पेंडिंग। All students are back. Yes, Fire. sir. Okay, fire. Yes, sir. Okay. Okay. कितना बचा है हमारा इसमें? ओके, सो टुडे लेक्चर आज यहीं खत्म होगा। एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर का ये थोड़ा काम चल रहा है। ओके, probably because of which tomorrow we will now continue with the rest of the fixed income instruments. Okay, and from next week we will be taking the derivatives. एक्चुअली प्लान था अदरवाइज ऐसा था कि आज ये खत्म होके कल डेरिवेटिव्स मुझे स्टार्ट करना था। ठीक है, बट लेट्स सी अगर कल अगर ऐसा होगा तो थोड़ा पेस ज्यादा रखेंगे, बिकॉज डेरिवेटिव्स का अगर कंसेप्ट थोड़ा मैं डिस्कस कर लूँ तो क्या है कि नेक्स्ट वीक में एटलीस्ट वो लाइव मार्केट्स में यू विल बी एबल टू ट्रैक इट। ठीक है, क्योंकि वो देखना जरूरी है कंपेयर टू अंडरस्टैंडिंग, और फिर आपको वो थोड़ा समझ में आएगा। ओके, इज इट क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो So, प्रोबेबली यस, हाँ बोलिए। आज प्लेसमेंट इंटरवेंशन का भी सेशन था ना 1 o'clock को? अगर वो है, अगर उसका लिंक आपको आया है तो डेफिनेटली यू नीड टू अटेंड। वो तो ऑनलाइन होगा शायद आपके लिए, राइट? हाँ, ऑनलाइन है गूगल मीट पर। हाँ, लिंक दिया है ना? हाँ। यस सर। लेट मी जस्ट टॉक टू देम। आपको अदरवाइज यहाँ ऑफलाइन में कितना टाइम लगता है, मतलब रिस्पेक्टिव घर पे पहुंचने के लिए वापस? 40 1 hour और 30 आपको? तो आप तो वैसे ही अटेंड नहीं कर पाओगे या कर पाओगे? हाँ, ठीक है, सिर्फ 2 लोगों के लिए 1 hour है, राइट? ओके, ठीक है, तो बस लेट्स टेक अ लीव देन। मैं ट्राई करता हूँ कि उनको बोलता हूँ 1:15 तक स्टार्ट करें। हाँ, वो मैं बात करता हूँ, अगर आज है कि नहीं पहले वो मैं कंफर्म कर लेता हूँ। अगर है तो इट विल स्टार्ट एट 1:15 के आसपास। ओके, एंड देन यू कैन ज्वाइन। हाँ, यस एवरीवन। वही वो जूम मीटिंग पे जाके जस्ट हैव द ईयरफोन्स, और जो भी क्वेरीज है प्लेसमेंट से रिलेटेड थोड़ा ढंग के रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछना। मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो तो आप एलिजिबल हो गए तो वही मिलने वाला है। ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट विल बी बेस्ड ऑन योर T1 T2 कैटेगरीज। T3 T4 इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, क्योंकि कंपनी ही आपको रिजेक्ट कर देती है अगर हम भेज भी दे आपका, बट वो फिल्टरेशन क्राइटेरिया फिर रहता है। व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट जस्ट वन बैच ओवर हियर, सो मैनी बैचेस, नॉट ओनली जस्ट ऑफ पुणे, अक्रॉस इंडिया की जितने भी बैचेस हैं वो सब लोग अप्लाई कर रहे हैं, और नंबर ऑफ सीट्स विल बी 20-30, एप्लीकेशंस विल बी 500-600। यू कैन अंडरस्टैंड द रेशियो। ठीक है, एक सीट के लिए 30 लोग लड़ रहे हैं फ्रॉम कॉम्पिटिशन परस्पेक्टिव, राइट? हाँ, वेरी okay then चलो, I am closing the session as of now. We will see tomorrow. ठीक है, चलो, thank you. Any doubts anyone? Online students अभी कोई डाउट है? नो Okay, चलो, thank you. और मैसेज में अपडेट Thanks. व्हाट्सएप ग्रुप Okay. में, ठीक है, रिलेटेड टू द प्लेसमेंट इंटरवेंशन कॉल। Thanks, bye.